Hello friends, good morning. Welcome to ACME Commerce Academy. This is NIKHIL JOSHI here. आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, चैप्टर नंबर 2, सोर्सेज ऑफ कैपिटल। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग and what are the determinants of retained earning. Now, retained means kept. So, retained earning means earning which is in the business. Earning which is not distributed as dividend is called as retained earning. So, retained earning is that part of profit, that part of net profit which is not distributed to शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। वो पार्ट है जहाँ से हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं किया है। सी नाउ बिजनेस इज फुल ऑफ फ्लक्चुएशंस, बिजनेस में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स। सो टू बी ऑन द सेफर साइड, व्हाट बिजनेस विल डू, जस्ट लाइक एट अवर होम, सी हम जो भी इनकम अर्न करते उसका कुछ हिस्सा हम सेव करते, सारा का सारा खर्च नहीं कर देते। सेम वे बिजनेस भी क्या करता है, बिजनेस भी जो भी अर्न करता है आउट ऑफ दैट, जो भी नेट प्रॉफिट अर्न करता है आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो भी हमारी इनकम बचती है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सो सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज केप्ट असाइड एवरी ईयर। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्रोविजंस मेड इन कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट। सो हम क्या करते हैं, सम पार्ट वी सेट असाइड, इसको हम साइड में रख देते हैं। एंड like for example, if company has decided that every year out of the net profit we will set aside 10% of the net profit for the future. So अब कंपनी क्या करेगी कि जो भी नेट प्रॉफिट आया उसका 10% दे विल क्रिएट अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड रिजर्व फंड अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट, और ये अकाउंट में ये रिटेन्ड अर्निंग को हम ट्रांसफर करेंगे। नाउ within a period of 4-5 years or maybe 10 years आपके पास खासा अच्छा कॉर्पस जमा हो जाएगा। Now the same funds can be reinvested in the business. Like in future, if you want to expand the business, आपको business को expand करना है, business को diversify करना है, in that case we can utilize the same profit. So retained earning is nothing but it is the reinvestment of the business profits. Now this process of accumulating profit, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना, so this process of accumulating profit is called as capitalization of profit. अब ये बिजनेस में हम इसको रिटेन कैसे करेंगे, हमने उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, राइट। नाउ हम क्या करते हैं, ये जो हमारी प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम कन्वर्ट करते हैं कैपिटल में बाय इशूइंग बोनस शेयर्स, जिसे हमने ये चैप्टर में लाइक बोनस शेयर्स मतलब क्या होता है कि दीज आर द शेयर्स विच इज गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ पे नहीं करना पड़ता है। दिस नॉर्मली हैपन्स व्हेन बिजनेस इज अर्निंग हाई प्रॉफिट, बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है, इन दैट केस कंपनी में इशू बोनस शेयर्स। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, टू रिड्यूस इट्स टैक्स लायबिलिटी, बिकॉज ये कैपिटल के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगता है, टैक्स किसके ऊपर होता है, प्रॉफिट के ऊपर होता है। सो इफ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल देन यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस। सो इट इज वन ऑफ द वेपन इन द हैंड्स ऑफ कंपनीज दैट बाय reinvesting money in the business, by capitalizing the profit of the business, they can reduce their tax liability. So in simple words we can say it is that part of net profit which is not distributed to shareholder as dividend and is retained by the company in the form of reserve fund. Now this company converts its reserve into bonus share capital and capitalizes its profit. ये प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते। नाउ आइए देखते हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो अभी तक हमने पढ़ा, अतः हमने समझा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is not distributed to shareholders as dividend, but
it is capitalized by way of issuing bonus shares. So company can use same money, utilize same money when company is in trouble, when company is in financial trouble, or company wants to expand its business को expand करना है या business को diversify करना है, at that time company may utilize that money. आइए देखते हैं determinant of retained earnings. Now what are the factors which is affecting retained earnings? First is total earning of the company. Like for example, if company is earning high profit, they will retain high amount in the business. So if there is ample profit, company can save and retain some part of profit. Higher the earning, higher will be the saving. Lower the earning, lower will be the saving. Again, it depends on the attitude of the management of the company, top management of the company. इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी. कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, दे वांट टू सेव मोर and pay lower rate of dividend to the shareholders, right? So it depends on the earning of the company. Again, it depends on the taxation policy of the government. If government increases the tax, company cannot save more, so retained earning will be less. But if government reduces the taxes, company के पास saving बढ़ जाएगी, right? So in that case there will be more retained earning. Again, it depends on the dividend policy. As I said, the top level management or the board of directors normally follow conservative dividend policy, where they want their intention is to retain more profit for the future. फ्यूचर में जो भी उनके प्लान्स होंगे बिजनेस के एक्सपांशन या डाइवर्सिफिकेशन के लिए, फॉर दैट दे वांट टू सेव मोर मनी एंड पे लोअर रेट ऑफ डिविडेंड. वेयरएज जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका इंटेंशन क्या होता है, व्हाई दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी टू गेट हायर रेट ऑफ डिविडेंड. सो अ फाइनेंशियल मैनेजर विल हैव टू बैलेंस बोथ दिस, दोनों को बैलेंस करके चलें, बिकॉज वी कैन नॉट गिव लोअर रेट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द अल्टीमेट, they are the provider of the capital, so we have to make them happy. So financial manager will have to balance both. So that is dividend policy. And then government control. Now government is a controlling authority, government is the regulatory body, so we have to, every company have to follow the rules and regulations and policies of the government. So company will have to formulate a dividend policy in accordance with the rules and regulations framed by the government. The company on its own cannot reduce the dividend or cannot offer lower rate of dividend to shareholders. Here they have to follow certain provisions which are made in the company's act. So I hope determinant of retained earning भी आपको समझ में आया होगा. क्या क्या है एक बार रिवाइज कर लेते point wise. Total earning of the company depends on the total earning. If earning is high, high amount of saving. If earning is low, low amount of saving, so less retained earnings. Then taxation policy of the government. If the tax rate is high, then you may have less, you may save less, and if government reduces the taxes, you may save more, so high amount of retained earning. Then again it depends on the dividend policy of the top level management, and in the last, government control. So I hope आपको retained earning का concept clear हुआ होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.